Good afternoon, my dear children. How are you? I hope you all are good at your home, and also you have to do your all the assignments which is given by your subjective teachers. So please note down all the assignments in your assignment notebook. Okay, students. So students, as you know, our chapter 7 is running in revision. So इस chapter में हमने carbohydrate, protein, vitamins, minerals, we will all study about these points, right? And hope you all are learn all these points. Okay, so students, let's come to the today's topic. Today we will learn about the teeth. So this is our today's topic, which is name is the teeth. So are you ready to study? Okay students, so let's start. The teeth. The teeth inside our mouth which help it to biting or cutting food. जो दांत है ये हमारे मुंह के अंदर होते हैं which help us to biting और cutting our food, जो कि हमारी हेल्प करते हैं खाने को काटने में और चबाने में. So this is the first step of digestion. तो ऐसे ही लो कि जब हम हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसका तो पहला स्टेप तभी शुरू हो जाता है जब हम खाने को चबाना शुरू करते हैं with the help of our teeth, right? So human babies begin teething for the first time. जब ह्यूमन का बेबी फर्स्ट टाइम अपनी टीथ का यूज करता है by cutting food, जब ह्यूमन का बेबी छोटा होता है, फिर धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता है तो उसके मुंह में दांत आना शुरू होते हैं. नाउ वी विल लेट्स स्टडी अबाउट कि किस एज में हमारे ह्यूमन के टीथ आना शुरू होते हैं. ह्यूमन बेबीज टीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज अराउंड 6 months. जब ह्यूमन का बेबी 6 महीने का हो जाता है, अराउंड 6 months. 6 months के आसपास जब ह्यूमन का बेबी हो जाता है तब उसके दांत आना शुरू होते हैं. एट द एज ऑफ 2.5 years, जब वो 2 या 2.5 साल का हो जाता है, वो 2 या 2.5 साल का हो जाता है, अ चाइल्ड 20 teeth, एक उस टाइम पर 2 या 2.5 साल के बच्चे की 20 दांत आ जाते हैं. सो दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. तो जो दांत बच्चे की 2 या 2.5 साल की उम्र पर आते हैं उन दांत को हम मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. तो मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बच्चे के दांत 2 या 2.5 साल की उम्र पर आते हैं वो दांत एक समय के बाद वो टीथ धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाते हैं और उन टीथ की जगह जो न्यू परमानेंट टीथ आते हैं फिर वो हमारी लास्ट एज तक रहते हैं. सो द मिल्क टीथ फॉल ऑफ वन बाय वन एंड मोर न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस. और फिर क्या होता है कि जो हमारे टेम्परेरी टीथ जो बच्चों के आए थे 2 या 2.5 साल की उम्र पर वो एक एक करके फिर गिरना शुरू हो जाते हैं एंड उनकी जगह पर नए दांत आ जाते हैं. सो दीज न्यू सेट ऑफ टीथ आर अराउंड 32 इन नंबर. और ये जो न्यू दांत जो आते हैं ये लगभग 32 होते हैं और हर एक जॉ में इन ईच जॉ 16 टीथ और हर एक जॉ में यानी कि हर एक जबड़े में ऊपर एंड नीचे दोनों साइड 16 होते हैं. 16 + 16 32. तो दोनों को मिलाकर 32 टीथ होते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक पिक्चर है जिसमें आपके 20 टीथ है. ये 20 टीथ वो टीथ है जो आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं. जो बच्चों के दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहते हैं वो 20 होते हैं और जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं वो नंबरिंग में 32 होते हैं. सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया.
एंड दे अपीयरेंसेस एट द एज ऑफ 20, जो कि हम 20 साल के जब होते हैं तब जाकर हमारे विजडम टीथ आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ह्यूमन का बेबी 6 मंथ्स का होता है तब उसके बेबी के दांत आना शुरू होते हैं और 20 दांत तब हो जाते हैं जब वो बच्चा 2 इयर्स का या 2.5 साल का हो जाता है। तो जब बच्चे के 20 दांत आते हैं उन दांतों को कहा जाता है मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ। तो ये वो पहला सेट है जो कि एक टाइम पर गिर जाते हैं। फिर जो सेकंड सेट आता है 32 टीथ का, और जो सेकंड सेट आता है हमारा वो आता है 32 टीथ का। और जब हम 20 साल के हो जाते हैं तो थर्ड सेट आता है जिसमें जो बाकी के बच्चे हमारे मोलर टीथ होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग कि जो तीसरा सेट हमारे दांतों का आता है वो किस एज में आता है? गुड, जब हम 20 साल के हो जाते हैं तब हमारा थर्ड सेट आता है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में कि जो दांत है वो कितने कितने तरह के होते हैं। So what we study? Types of teeth। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिसॉरस। इंसिसॉरस टीथ की जो पिक्चर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पिक्चर कैनलीज एंड थर्ड प्रीमोलर्स एंड द फोर्थ पिक्चर इज मोलर। तो ये 4 टाइप्स की टीथ होते हैं हमारे दांतों में। अब हम बात करते हैं कि इंसिसॉरस कितने होते हैं। इंसिसॉरस हमारे पूरे मुंह में 8 होते हैं और हर एक जॉ में 4 इंसिसॉरस होते हैं, ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 4। अब हम बात करते हैं कैनिनीज की। कैनिनीज 4 होते हैं हमारे मुंह में, 2 ऊपर वाले जॉ में और 2 नीचे वाले में। अब हम बात करते हैं प्रीमोलर्स की। कुल मिला के प्रीमोलर 8 होते हैं, ऊपर वाले जॉ में 4 और नीचे वाले में 4। अब बात करते हैं मोलर्स की। मोलर्स कुल मिला के 12 होते हैं। ईच जॉ have a 6 molars, हर एक जॉ में 6 मोलर्स होते हैं, यानी कि कुल मिला के 12। तो ये हो गए हमारे पूरे दांत। और अब हमें पता चल गया कि दांत कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंसिसॉरस, सेकंड कैनिनीज, थर्ड प्रीमोलर्स एंड द फोर्थ इज मोलर। इंसिसॉरस हमारे मुंह में कितने होते हैं? 8 होते हैं और हर एक जॉ में 4 इंसिसॉरस होते हैं। उसके बाद में बात करें कैनिनीज की। कैनिनीज हमारे मुंह में कुल मिला के 4 होते हैं और हर एक जॉ में 2 कैनिनीज होते हैं। अब बात करते हैं प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स हमारे मुंह में कुल मिला के 8 होते हैं और हर एक जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। अब बात करते हैं मोलर्स की। मोलर्स कितने होते हैं? 12 और हर एक जॉ में 6 मोलर्स होते हैं। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ टीथ समझ आ गए कि हमारे टीथ कितने टाइप के होते हैं और हर एक जॉ में हमारे कितने कितने मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनिनीज एंड इंसिसॉरस होते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। Structure of a tooth. So you can see the picture of structure of a tooth. Okay, आपको यहाँ tooth का structure दिखाई दे रहा है। Okay, so the tooth has anatomical parts. तो हमारे tooth के 2 anatomical parts होते हैं, which is crown and the second is root. So let's first talk about crown. Crown. This is the visible part of a
tooth in the mouth. ये एक visible part होता है हमारे दांत में and it is covered with enamel, जो कि enamel से covered होता है. Now the root. This is part is enamel in the jaw and each and in the interior tooth in the bony skulls. Alright, and root is the outermost layer of the crown and it is the hardest substance in our body. Alright, and the dentin. Dentin is the next hardest layer which form book of a tooth and can be sensitive of the protecting of enamel and it is hard inside dentin. There is pulp which is very soft, okay, and it contains blood vessels and nerves and form the certain part of a tooth. So hope you all are learned. Okay, now we will learn about next topic which is, so we have prevention about some point which is, the first is brush your tooth twice a day and once in the morning and once at the night. We should brush twice a day, okay, and the second point is clean between your teeth with the floss and your dental cleaner, okay, and third is take a healthy and nutrition diet like milk, like curd, like fruits, like vegetables and etc. And the next is avoid eating chocolates, candies, etc. We should avoid chocolates, candies because the chocolates and the candies is not good for our teeth. When we eat too much chocolates and candies, our teeth start destroy because the bacteria which is like too much sweets is come in our mouth and our teeth is not doing well work. So that's why we should avoid chocolates and candies. And the next point is regular dental checkup. Regular dental checkup, okay? Teeth and its structure. Hello. My child is complaining of a toothache from a couple of days. Let me check. Oh, you got cavities in mouth. Why it happened? When foods with carbohydrates like bread, cereal, milk, soda, fruit, cake or candy stay on your teeth, the bacteria in your mouth turns them into acids. The bacteria, acid food debris and your saliva combine to form plaque which clings to the teeth. The acids in the plaque dissolve the enamel, creating holes called cavities. Most of us take our teeth for granted until something goes wrong. You know, our teeth are one of the most important parts of our body. We need to take good care of them. Teeth are very important for our body and they perform many functions like teeth help us in biting and chewing the food. They give shape to our face. They help to speak clearly. Can you please explain more on the types and structure of teeth? Yes, sure. Teeth are present on the jaw. We have one upper jaw and one lower jaw. There are two sets of teeth, temporary teeth, permanent teeth. A human baby has no teeth at the time of birth. A tooth begins to grow when the baby is about 6 or 7 months old. By the age of 3, a child usually has a set of 20 teeth. This set of teeth is known as milk teeth or temporary teeth. At the age of about 6, the milk teeth start falling out one by one. They are replaced by new teeth that are larger in size. The second set of teeth is called the permanent set of teeth. Adults usually have 32 permanent teeth, 16 in the upper jaws and 16 in the lower jaws. Each type of tooth has a slightly different shape and performs a different job. Depending on their functions, there are 4 kinds of permanent teeth: incisors, canines, premolars, molars. Incisors. Incisors are chisel-shaped teeth and are present in the front of each jaw. They are 8 in all, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. These teeth help in cutting and biting the food.
Canines. Canines are sharp and pointed teeth that help us to tear food. They are placed next to the incisors. There are 4 canines in all. 2 in the upper jaws and 2 in the lower jaws. Premolars. These are flat and broad teeth and are placed next to canines. There are 8 premolars in all, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw, and found at the sides of the jaw. Premolars help us in cracking and chewing the food. Molars. These are broad teeth and are placed next to premolars. There are 12 premolars in all, 6 in upper jaw and 6 in lower jaw, and found at the sides of the jaws. Molars help in grinding the food. And now we will start our next topic, which is name is the digestive system. Okay students, so are you ready to study? Okay, so let's start the digestive system. You all are already know about the digestive system. So, in our digestive system, the first step, the mouth. When we eat some food and our teeth starting biting or cutting our food, and then the food mixed with the saliva. So, this is the first step of the digestion. कि जब हम हमारा खाना मुंह में रखते हैं, फिर हमारे teeth उनको बाइट करना शुरू कर देते हैं, and next saliva हमारे खाने में मिक्स हो जाती है. सेकेंड पॉइंट, हम उसको अपने फूड पाइप से उसको निगलते हैं. द गलेट इज ऑपोजिट एंड द फूड गोज डाउन इन दी स्टमक. फिर जो खाना हमने खाया वो हमारी विंड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है, एंड देन इनसाइड योर स्टमक द फूड इज मूव्स फर्दर एंड देन मिक्स्ड विद द डाइजेस्टिव जूस. तो जो खाना हमारे स्टमक में गया वो स्टमक में जाने के बाद में डाइजेस्टिव जूस में मिक्स होता है, एंड देन फोर्थ प्रोसेस में वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद द डाइजेस्टिव फूड कंप्लीटली, और उसके बाद में हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही फिर उसमें से हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए उनको कैरी करता है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, और उसी फूड से फिर ब्लड बनना शुरू होता है, एंड फिफ्थ प्रोसेस में वो खाना पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है. तो ये पूरी प्रोसेस हो गई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की. वी विल सी अ स्मॉल वीडियो ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ताकि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए. Now, it is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food
is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus. So students, this is the end of our today's topic. Please learn your all the assignments and also do in your assignment notebook. And if you have any doubt, any problem, you can ask me in your doubt session. Okay students, so it's time to say goodbye. Take care and have a nice day.